morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we will learn how to mark some important dam, river, and important crops on India's map. But before we start, let us talk about some important point regarding this exam. SST will contain, that is social studies, will contain four subjects, that is history, geography, political science, and economics. And from this, all four subjects you will get 10, 10, 10 and 10. That means हर बुक से इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. दैट गिव्स अ मैसेज कि हमें सब पे इक्वली ध्यान देना है. नाउ सेकंड थिंग, आर बैटल ग्राउंड. एंड नाउ यू विल थिंक कि सर व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट बैटल ग्राउंड? इज इट अ बैटल? नो, नॉट एग्जैक्टली. बट इन हिस्ट्री यू मस्ट हैव लर्नड कि जब भी कोई वॉर दो ग्रुप्स बीच में लड़ा जाए और अगर किसी एक ग्रुप को बैटल के बारे में या फिर कह सकते हो बैटल ग्राउंड के बारे में पहले से अवेयरनेस हो कि हाँ यहाँ पे ऊंचाइयाँ हैं, यहाँ पे थोड़ी ढलान है, बैटल ग्राउंड पहले पता है, तो वो ऑब्वियसली एक बेटर वॉर लड़ सकता है. उसी तरीके से ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू मस्ट बी अवेयर कि तुम्हारा बैटल ग्राउंड दिखता कैसा है. सपोज सेक्शन ए will contain 24 marks and out of which you have to attempt only 20 questions. That means you must be aware कि हाँ अगर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं उन्हें हम छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं कि हाँ ये तो करना ही नहीं है, अपनी ईगो पे नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड अगेन यू विल थिंक नहीं सर मैं सारे 20 कोड कर देता हूँ, तो क्या होंगे लास्ट के 4 जो तुम्हारे बचेंगे वो आंसर्स चेक नहीं होंगे, इसलिए स्मार्टनेस मत दिखाना, केवल जो तुम्हें 20 स्टार्टिंग में लग रहे हैं उसे सॉल्व करना. सेकंड थिंग, इन सेक्शन बी 22 क्वेश्चन विल बी देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 18. अगेन सेक्शन सी विल बी केस बेस्ड, जिसमें से केवल 2 या 3 पैराग्राफ आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें केवल आउट ऑफ 12 तुम्हें केवल 10 क्वेश्चन करने हैं. जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मैप पोर्शन, वो सेक्शन डी रहेगा हमारा. ठीक है. सेकंड थिंग कि हर क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. दैट मींस कि एट द एंड ऑफ यू आर गोइंग टू सबमिट योर आंसर शीट, अगर तुमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो डू अ स्मार्ट वर्क, hit on some options. Suppose you have attempted 38 questions, you are not कि सर 2 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, 38 ही आ रहा है, तो कोई 2 क्वेश्चन जिसमें तुम फैमिलियर हो थोड़ा सा स्मार्ट गेस्ट वर्क करो और हिट करो. क्यों? नेगेटिव मार्किंग है नहीं. अगर तुम मान लो सपोज ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी सही होने की? 1/4 सबकी होगी, तो ऑब्वियसली चारों में से तो कोई आंसर होगा, तो हिट कर दो. इससे क्या होगा, अगर तुम नहीं हिट करके आ रहे हो तो कंफर्म है कि तुम्हें 0 अलॉट होने वाला है, लेकिन अगर हिट करके दिल भी चांसेस क्या हो तुम्हारा सही जा सकता है. तो ये स्मार्टनेस आपको पेपर में दिखाना है. नाउ थर्ड थिंग अबाउट दिस एग्जाम, टाइम को अच्छे से मैनेज करना. ये नहीं है कि 90 मिनट्स दिए गए हैं, सर एमसीक्यू तो है आराम से धीरे कर लेंगे, नहीं, सब पे एक इक्वल अमाउंट तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. घर से प्रैक्टिस करके आनी है कि तुम कितने में क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो. ट्राई टू सॉल्व 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम. ओके, जिससे क्या हो दोबारा से बार लुक कर सको. पर ध्यान देना तुम्हें OMR शीट मिलेगी, तो फिल करने से पहले यू मस्ट बी श्योर अबाउट इट. और ये भी नहीं है कि बिल्कुल सर मैंने सर 89 मिनट्स तक पेपर सॉल्व किया, अब चाह रहे हो कि लास्ट के 1 मिनट में सारे OMR शीट पे मार्क कर लो. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टू मार्क, क्योंकि पेन होता है, पेन में सर्कल करना है, करके पूरी टाइम लेगा इसमें कि हाँ अब जाकर कलर हो गया. तो टाइम इसके लिए भी ध्यान रखना कि हाँ OMR शीट में फिल करने में भी टाइम लगता है. सपोज इसी समझ में आ रही होंगी, अप्लाई करना है, घर से मॉक्स दे के आने हैं. नाउ आज का टॉपिक ये रहेगा. पहले हम जानेंगे कि सॉइल टाइप्स कौन कौन से हैं इंडिया में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. ये 8 डैम, फर्स्ट सलाल डैम के बारे में देखेंगे, सेकंड भाखड़ा नंगल, थर्ड टेहरी डैम, फोर्थ वन विल बी राणा प्रताप सागर डैम,
then fifth Satasarovar, sixth Hirakund, and then seventh that is Nagarjuna Dam, and the last one, the eighth one is Tungabhadra. ये सिलेबस CBSE ने अपलोड किया है कि इन डैम्स का इधर पढ़ना है. सिंपल, तुम्हारा डिफाइन हो गया. नाउ अदर थिंग इज जो मेजर राइस और वीट के जो एरियाज हैं, यहाँ पे एरिया अलॉट, मैं स्टेट तो बताऊंगा ही, लेकिन एक रफ पिक्चर कि हाँ ये देखो ये एरिया कवर करता है, तो मैं ये भी दिखाएंगे. और एज वेल एज स्टेट्स रिलेटेड टू शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन और जूट, स्पेशली द maximum producer or largest producer of these. Now we will start from the first topic, that is major soil type. You can go on page number 9 and see this map in your book also. Suppose I will mark A as alluvial soil and here A is present, and during examination I will ask this A represents which type of soil. You will say, sir, alluvial soil. You will hit on the option that contain alluvial soil as an option. Now, suppose if I will mark B as a black soil, again I will ask this B represents what type of soil? We will say black soil. You will hit on that option which contain black soil as an option. Now C, suppose this region, I will again ask which type of soil? You will say it's a red soil and yellow soil. Now D, suppose here you will say, so this is lateric soil. And the E part, that is very easy. Arid region, that is some Rajasthan, majorly Rajasthan region and some Gujarat region also. Then last one, I mark F this side. You will say, sir, this is forest and mountain type of soil. Hope ये clear होगा. Next, again, open page number 28 in your book and you can see this map and we'll solve this. Suppose first is Salal Dam. अब जो भी डैम मैं पढ़ाऊंगा, from this you have to remember these three pieces of information. That what is the name of the dam? First, add this with in which state this is present. Add this with on which river this dam is located. Whenever I will say about a dam, try to remember the name, in which state that dam is present, and on which river. Start. First with Salal Dam. On which river? It is on Chenab river. State, Jammu, Kashmir. Bring your notebook. Start writing these 3 points. Now, the second one is Bhakra Nangal Dam. Again, name of dam, Bhakra Nangal. How I will ask during examination? I will mark, like suppose I will mark X on this area, and I will ask that this X represent which dam? So you have to say, sir, Bhakra Nangal Dam. On which river? Then you will say Satluj river. In which state? You will say Himachal Pradesh. Tehri Dam, that is third one. Name of the dam, Tehri. State, that is Uttrakhand. River, that is, focus on this and do not confuse during examination. From Gangotri, a river named as Bhagirathi origins, and from Badrinath, Alaknanda. They meet at Devprayag. After this, the river name is Ganga. And Tehri Dam is located somewhere here on Bhagirathi river. So you have to tick Bhagirathi. And suppose during examination, in none of the options Bhagirathi is present, in option C, Ganga is present, then you have to mark Ganga as right option. Again, next one is Rana, Pratap, Sagar, that is fourth one. State, Rajasthan. On which river? That is Chambal river. Satasarovar state, Gujarat. River, Narmada. Tungabhadra, simple, on Tungabhadra river, and state, Karnatka. This was fourth, this was fifth, then sixth, this is Nagarjuna, seventh, state. Please try to understand, this is here on the border of Andhra Pradesh as well as Telangana. अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट होगा तो उस पे टिक कर देना, अगर बोथ का ऑप्शन है तो बोथ पे टिक करना. क्यों? दोनों के बॉर्डर पे लोकेटेड. The last one is eighth, that is Hirakund Dam. In Odisha, river Mahanadi.
यहाँ पे रिवर कौन सी है? कृष्णा रिवर, यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, होप सभी क्लियर क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे लिख भी दिया है यहाँ पे। नाउ अगर राइस का मेजर प्रोड्यूसर की बात की जाए या मैक्सिमम प्रोड्यूसर की बात की, यू विल मार्क ऑन द ऑप्शन वेस्ट बंगाल। बट if during examination they will ask you the region, that is area, you have to mark this area, okay? और wheat और राइस का ही केवल एरिया याद करना है। तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर क्या कौन हो गया? वेस्ट बंगाल। सेकेंड क्रॉप इज दैट इज wheat। मैक्सिमम प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश, और रीजन ये रीजन है। सुगर केन अगेन मैक्सिमम प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश, देयर आर अदर ऑल्सो, बट यू हैव टू फोकस ऑन द मैक्सिमम वन एंड टेक अ ग्लैंस कि हाँ ये स्टेट्स है, लेकिन बेसिकली तुम्हें याद रखना है कि हाँ यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकेट करने आ सकता है। अगेन टी, ऑप्शन विल बी आसाम। नाउ कॉफी इन कर्नाटका, दिस रीजन। नाउ अबाउट रबर here it is Kerala। 90% you will say कि अगर suppose India is producing 100 ton of rubbers or something like this, the 90%, that is 90% is in produced in Kerala। Now cotton, major producer Gujarat here. There are other regions also, but you have to remember the larger producer। Again, the last topic of today, jute. Major producer, that is West Bengal. And try to just focus the data I am giving may differ from your NCERT because those NCERT are quite old. The data has not been changed. What I am trying to say, these are some recent surveys, that recent economic surveys from where I am trying to just give you some information. Okay. Suppose now some practice work. Answer in the comment section. This triangle represents which dam? A. And suppose this region is a maximum producer of which crop? You have to mark, like suppose this is X region. And one more. Suppose this is Z, capital Z. Which dam is this? Okay, one more. Suppose this is F. This is F. This is F. F. So F is covering which crop, region or area? You have to answer these questions. Thank you. See you next class. और जो भी मैंने आज पढ़ाया है, try to practice, draw map. Suppose I'm drawing this map for you. Suppose roughly you have drawn this type of map and try to just mark कि हाँ सर ने पढ़ाया यहाँ पे there is some Sadasarovar Dam, Rana, Sagar, Salal Dam. Talk about river also, the Narmada is flowing in this direction. Chambal, Chenab here, Satluj here. So try to look at these rivers and the areas of crop. So then if you will practice, then you will get to learn more. Thank you, class.